Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. And now we're discussing Tess of Durbeyfield's MCQs on Tess, a famous novel by Thomas Hardy. So again, Hardy was born in 1840 and died in 1928. He's known for his fatalism. His novels are also called Wessex novels, and the play's action takes place in Wessex. So from here, the story begins. John, what does John learn? That at the beginning of the novel, so John is the father of Tess, and he comes to know that he comes from an aristocratic family. कि उसकी lineage aristocratic family से मिलती है, so he's happy for this. The ancient name of Tess family is, as the title stipulates, Durbeyfield. However, the family uses a different form of the name. What is that? So it is Durbeyfield. So they are not using the name Durbeyfield. They are rather using the name Durbeyfield for the family. Angel and Tess first see each other at May Day dance. So it's a metropolitan May Day dance. ये किसी ज़माने में स्प्रिंग की वेलकम के लिए हुआ करता था. सोल्जर्स इस पे सेलिब्रेशंस करते थे, फिर कॉमन फोक ने इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया. So it was a dance to invite and welcome spring, जिसपे Angel or Tess, Angel Clare and Tess Durbeyfield, they first see each other. How many siblings does Tess have? So she has 6 siblings. 6 बहन भाई हैं इसके. Who tells Angel that Tess has gone to Sandbourne? So it is Mrs. Durbeyfield. Tess की मदर बताती है कि वो सैंडबोर्न के इलाके में चली गई है. After Angel picks up Tess while Angel was sleepwalking, where does he place her? So he places her in a coffin. वो एक चर्च की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे वो उसे कॉफिन में लिटा देता है. So it was not something horrible. This was happening out of romance. Which musical instrument does Angel play? So he plays on the harp. Harp is like a guitar type instrument जिसमें strings होते हैं और बड़ा sensitive होता है ये इसके strings जो हैं. In what town did Tess grow up? So this town is known as Marlet. Their horse Dash faces an accident and dies. एक carriage से टक्कर होती है और मर जाता है. इसके घोड़े का नाम Prince होता है जो कि family horse होता है. As a result of a very unlucky decision, Tess agrees to go to her supposed relatives to seek help for the family. What is the main reason that makes her go? So, एक unlucky decision होता है ये जो कि टेस की लाइफ को चेंज करने वाला है. एंड एक supposed relative जो कि जॉन को पता लगता है कि वो डर्बीविल्स में से है, तो इनको ये भी पता होता है कि डर्बीविल्स कुछ दूर रहते हैं. सो वो supposed फैमिली है इनकी, उसके पास टेस को भेजा जाता है फॉर हेल्प और फॉर जॉब और फॉर क्लेमिंग द नेम ऑफ द फैमिली. सो दिस इज वेयर द लाइफ ऑफ टेस इज चेंजिंग. सो यहाँ पे मेन रीजन क्या होती है? क्योंकि टेस does not want to go, but she feels herself responsible for the death of family's only horse. ये लोगों के सामान भी ले जाने के काम आता है, ये इनके गुड्स भी ले जाने के काम आता है. So when the horse dies, तो ये कहीं के नहीं रहते. So she is now bound to go to serve the family. Where does Tess go? She goes to Mrs. Durbeyfield. ये अलग बात है कि वहां जाके पता लगता है कि they're not the real Durbeyfields, but now she is there. कुछ ना कुछ उसने अपनी फैमिली के लिए करना है. So she stays there. Alec is Mrs. Durbeyfield's an immoral son. Alec उसका बेटा है. He's immoral and he is taking his chances to seduce Tess whenever is possible. Finally, at the place named the Chase, Alec is able to seduce Tess. So it is a place where Tess, first of all, she is feeling tired. Secondly, she has already said no to Alec many times, and to some extent, yes, she may be in his charms. And thirdly, she feels that she is obliged to Alec because he gave her a job. So Alec seduces her.
Why can't Mr. Durbeyfield make the trip to the market? Like he's too drunk. ये उस वक्त की बात है जब टेस प्रिंस को लेके जाती है और प्रिंस मर जाता है. Afterwards, Tess leaves the place, Mrs. Durbeyfield, और उसका जो उस illicit relation के result में जो baby होता है, since it is born out of sorrow, so Tess names the baby as Sorrow. What advice does Mrs. Durbeyfield give Tess when she comes to know that afterwards that she's having a relation with Angel and they're going to marry each other? She forbids her not to tell Angel anything about Alec or her past. After the death of her child, she begins to work for a mild couple of Mr. and Mrs. Crick. So ये डेयरी फार्म ओनर्स होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, जिनके पास ये काम शुरू कर देती है एज अ मिल्कमेड. After the death of her child, Tess receives her village to find a job as a dairy maid. How many other people apart from Tess and Cricks live in the house? So there are 4 more people. So these are all milkmaids, including Tess. Angel has 2 brothers, both of whom studied at Cambridge. However, Mr. Clare did not pay for Angel's education. But it is because he was having heretical, unorthodox kind of ideas, revolting ideas. तो उसके बाप ने उसकी तालीम पे पैसा नहीं लगाया. So वो आ जाता है अपने हवाले से फॉर्मिंग करने के लिए, और इसी जगह पे जहाँ पे टेस्ट होती है वहां पे he is also there. What even causes Tess to realize that Angel's affection for her? तो वो एंजल जो है वो टेस को उसकी फेवरेट काउस देता है मिल्किंग के लिए. सो टेस को यहां से लगता है कि ही लाइक्स हर. एंजल जो है टेस को 25 पाउंड्स देता है बिफोर ही लीव्स फॉर ब्राजील. What part of the house do the Durbeyfield need to repair? So it is the roof of the house that is badly damaged. Midway through the novel, Alec becomes a preacher. So we find a change in him, that immoral person becomes a preacher who is primarily responsible for Prince's death. So Tess feels it is she. Angel leaves England to form at Brazil. तो ब्राजील जाता है वो फॉर्मिंग के लिए, और उसके पीछे रीजन है, वो हम देखेंगे आगे क्या रीजन है. What is the stone monument called which Alec makes Tess swear? So this comes by the end of the novel. So this is cross in hand under the Stonehenge. वो Stonehenge के नीचे cross in hand नामी एक monument है, वहां पे होते हैं ये. What does Angel confess on their wedding night? So wedding जब इनकी होती है तो Angel wants to share his secret. Though Tess की मदर ने कहा था तुम कुछ ना शेयर करना, लेकिन when she sees कि Angel is sharing his secret that he had an affair, तो Tess जो है, हालांकि Tess से पहले शादी से पहले एक लेटर लिख चुकी होती है Angel को, लेकिन वही चांस एंड कोइंसिडेंस वो लेटर कारपेट के नीचे चला जाता है, Angel को नहीं मिलता. So टेस को लगता है कि शायद इसने ये पढ़ लिया है, इस वजह से ये राजी है मुझसे शादी करने पे. स्टिल she also gets encouraged and she also tells that she is not a virgin due to Alec. So इस बात पे एंजल की वो जो एक फजूल किस्म की मर्दाना सोच है वो सामने आ जाती है कि वो अपना अफेयर वो चाहता है कि बर्दाश्त हो जाए, लेकिन उसकी वाइफ का अफेयर जो पास था वो उसे बर्दाश्त नहीं होता. So eventually he goes to Brazil. How does Alec die? Tess kills him in the end. So that is by the end of the novel कि एंजल नहीं आता और एक लंबा अरसा उसकी लेटर्स भी नहीं आते. टेस एंजल के घर भी जाती है उसकी फैमिली से हेल्प लेने के लिए, जो कि उसकी हेल्प नहीं करते. जो एलेक है वो इसको देख लेता है, वो फिर इसके पीछे पड़ जाता है. एंड टेस इज अगेन बाउंड टू लिव हिम अपनी फैमिली की वजह से, ताकि एलेक उसकी फैमिली को भी सपोर्ट देता है. तो जब वो उसके साथ रहना शुरू हो जाता है तो अचानक एंजल आता है.
सो उसको देख के टेस को रियलाइज होता है कि एलेक ने मेरे से क्या क्या करवा लिया एंड स्टिल ही इज डोमिनेटिंग ऑन मी, तो वो उसे शूट कर देती है। हाउ डज टेस डाई? शी इज हैंग्ड। तो वो स्टोन हेंज के नीचे वो पकड़े जाते हैं और इस मर्डर के हवाले से, और इसको ले जाया जाता है और इसको फाइनली शी इज हैंग टू डेथ। So this was Tess of Durbeyfield by Thomas Hardy.